A 16-year-old girl from Balanga in Puri district, who was allegedly set on fire on July 19, died after 14 days of critical treatment at AIIMS Delhi on Saturday, triggering an outpouring of grief and a firestorm in Odisha's political circles. The BJD and Congress slammed the BJP-led Odisha government, accusing it of shielding culprits and failing to act. The BJD demanded Rs 2 crore in compensation and arrests within 7 days, warning of protests. Congress threatened to gherao the DGP's office if there's no progress. In response, BJP leader Sameer Das maintained that no involvement has been found so far. He appealed to political parties to refrain from politicizing a tragic and sensitive matter, noting that CM Mohan Majhi personally checked on the girl's health during her treatment. The incident occurred near Bayabar village where the girl was found with 75% burns. Though she had earlier claimed she was set ablaze by 3 unknown people, police say investigations have not established any external involvement. The victim's father, too, urged political parties not to exploit their tragedy. से पुलिस प्रशासन कौन नैतिक दायित्व ना से भली ट्वीट करने से प्रथमे प्रथमे नैतिक दायित्व नियंतु जे पीड़िता जिते चिकित्साधीन थे आ भितर प्राय 9 दिन घटना घटला 15 दिन घटना घटला 15 दिन घटला किंतु से आम न्याय मागिଛୁ 7 दिन पर आम डीजीपी कार्यालय कहूँ डीजीपी कार्यालय घर बयान पर बयान चली रेकर्डिंग चली केवल कल्प्रिट को बंचेवा ये सब कहा जाए इट इज ए टेंडेंसी एटा गोटे प्रकार रणनीति कल्प्रिट को बंचाइबार रणनीति एटा कहीं तार मिनिंगटा निश्चित जदि आप बुझे तार घटना हूँ निश्चित भाव में सो मोट कथा से निजक निजे कर तार उत्तर आसूची मु राजनैतिक बयानबाजी करने चाहिए राजनैतिक बयानबाजी आवश्यकता है आसंता काली मो प्रश्न जहाँ पचारे मत आसे मुझे उत्तर देती मुझे दिल्ली एम्स जाइली मुख्यमंत्री व्यक्तिगत भाव में परिवार सहित फोन में कथा पचार केमी अच्छी कौन अच्छी एक मुझे जानी परिवार सहित